from Hubli. Yeah, and I believe this session will be more fruitful than our earlier session what we had on TallyPrime, and the session would end with Q&A. So keep your questions ready and make the best use of the time given with the speaker. The speaker, Saida ma'am, is a well-known speaker and a subject expert on the topics which will be covered today. We also have Jairaj sir here, who is a sales manager at Tally. Like every time we start with Navkar Mantri in all the programs for Jito. So I would request everyone to remain silent for 2 minutes, and I'll share the screen and start Navkar Mantri. Thank you everyone for remaining mute. And now before we start with the speaker, I would like to give a few words about Tally. Tally is one of the most used and simplest software available in the markets, and it's got a history of more than 40 years. And we at Tally have more than 2 million customers who actively use Tally day in and day out. So it's like it's an era where पहले भगवान को बिठाएंगे, फिर Tally लाएंगे और फिर business start करेंगे. So that's how software, how important a software is. And it's also told that your business is as smart as your software is. And Tally by far is the most simplest software available in the markets. Now I request Saida ma'am to take charge and carry on with the presentation. Thank you everyone. Saida ma'am, you are a host, so you can start with the session. Okay, am I audible? Very much, yeah. Okay, thank you. So good afternoon, everyone. So today we'll start up with the session of Magic of TallyPrime. Okay, so I believe that every businessman is a magician. Okay, so I hope we all are concerned with our accounting, how we maintain it. Okay, so TallyPrime, it is something, it is the best accounting software. One can use it. Okay, so today's session we will discuss many points regarding features related things. Okay, so I'll just share my screen. My screen is visible. It's visible. Hello. Yes, oh, thank you. Okay, thank you. So today we are going to discuss, regarding TallyPrime with AWS as well. Okay, so I welcome you all, each one of you, for this session. Okay, so today's highlight of the session are we are going to discuss about TallyPrime powered by AWS. Okay, and then we will discuss automatic e-way bill generation. Okay, and then we will discuss GSTR and HSN validation. Okay, so from TallyPrime itself, you will get the GSTN as well as HSN validation. We will discuss that, and then we will discuss GSTR reporting. Okay, your Gst R1, GSTR 2A, and 3B. Okay, how easily you can just export the files and file your returns very conveniently. Okay, and lastly, we will discuss banking services, how you can set the automatic check range. Okay, when you're doing the payment each time, it takes automatically. We will discuss that. Along with this, we will also discuss auto bank reconciliation today. Okay, ये आज के highlights हैं, so which we are going to discuss. Okay, so first point जो हम discuss करेंगे, TallyPrime powered by AWS. Okay, so ये AWS क्या है? How this is going to help us? Okay, so firstly, yes, sir. Okay, so AWS, Amazon Web Services.
Okay, so how this is going to help and ये नया क्या है AWS. So मैं short में आपको बोलती हूँ कि AWS आप just Google पे जाके, okay, if you have taken this AWS, आपने purchase किया है and you want to access your Tally on Google itself, okay, so आप easily Google पे जा सकते हो. एक link Elcom की होती है, वहाँ पे आप जाके open करना है आपको. ओपन करके आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं. यू कैन मेंटेन योर एंटायर अकाउंटिंग एनीवेयर एनी टाइम. ओके, आप कहीं पे भी कहीं से भी आप इजीली अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं. Okay, you can handle all your transactions, invoicing हो, reporting हो, everything just same like your TallyPrime which you will use at your system. Okay, so ये पूरा क्या होता है कि ये पूरा जो है virtual होता है. Okay, so आपका जो ये AWS होता है आपके एक सिस्टम में डालते हैं. ओके, वो आफ्टर दैट आप कहीं पे भी हो, आप ऑफिस के बाहर हो, स्टेट के बाहर हो, सिटी के बाहर हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके एलकॉम के लिंक ओपन करके इजीली आप अपनी अकाउंटिंग जो होती है टैली प्राइम में वर्क करना होता है, आप इजीली अपना अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो इसका मैं डेमो भी दूंगी आपको ये कैसे वर्क करता है शॉर्टली. Okay, so it is an option to stay connected to your business wherever you are. Okay, आप कहीं पे भी easily कर सकते हो operate. So yeah, so here we have things reliability. So ये AWS जो है it is very reliable because we understand, okay, your accounting data you want it to keep it confidential. Okay, so TallyPrime जो AWS service जो आपको provide कर रहे हैं it is trustworthy. Okay, ये आपका data जो है it will keep it very safely. Okay, and everything you need in one place. So आपको especially during lockdown, okay, क्या होता है अगर हम ऑफिस नहीं जा सकते या कोई भी reasons, employee today we have days of work from home. Okay, आपके employees हो, आप इन कहीं पे भी easily operate कर सकते हो. It will be in one place. Okay, and flexibility, ये flexible भी है because TallyPrime we give you the promise that it is flexible product. So ये flexible है, आप easily just create नहीं alter भी कर सकते हो, easily आप सब कुछ maintain कर सकते हो. Okay, and this processor cognizant भी है. Okay, easily आप virtual computer पे डाल के आप easily use कर सकते हो. Okay, so ये आपको easily Chrome पे easily आप जा करके वर्क कर सकते हो. एंड देन इट इज इकोनॉमिकल. ओके, आपको लग रहा होगा कि टैली ने हमने डाला है तो इट माइट बी एक्सपेंसिव. नो, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. या हमने चार्जेस लगाए हुए हैं, इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल. ओके, सो कोई भी इजीली यूजर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लेके यूज कर सकते हो AWS. ओके, सो अ सोल्यूशन मेड फॉर यू. So आप क्या expectation रख सकते हो ये solution से? A private virtual machine with computer for each customer. Okay, and then ये premise जो है ना, ये on premise नहीं होता. Okay, physically नहीं, आप online कर सकते हो. Easily Chrome पे डाल के आप easily work कर सकते हो. Okay, and ये आपको security, safety भी देता है. It has 3 things. Okay, आपको secure pin देगा. Okay, you can enter your email ID, password और secure pin. Okay, so 3 things. So it is very convenient and it assures the safety as well, safety and security. Okay, and it is high availability of AWS infrastructure. So आपको तो पता है Amazon Web Services, it is very good. Okay, on cloud option which we have. So it is highly, we have availability and it is a good thing. Okay, so it assures you, and then you can also take the backup. Flexibly आप backup ले सकते हो. आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, सिंस इट इज वर्चुअल, सो आपको कंसर्न होगा कि मेरा डेटा भाई कितने स्टोर होगा. सो इट इज वेरी सिंपल, आपको वहीं पे ऑप्शंस दिए जाएंगे. ओके, यू विल हैव 2 थिंग्स. ओके, एक फोल्डर होगा जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हो. ओके, सो दैट इज बैकअप स्पेस. एंड और एक डेटा होगा जहाँ आप अपना प्राइवेट भी रख सकते हो. लाइक एग्जाम्पल, वी हैव 5-4 यूजर्स. ओके, सो एक यूजर अपना डेटा ही डजंट वांट टू शेयर. ओके, इन कैसा कर सकता है, अपने प्राइवेट स्पेस में भी बैकअप रख सकता है. दे कैन इजीली स्टोर. तो स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है आपको. ओके, एंड देन मैनेज कंप्यूटर एंड यूजर्स फ्रॉम अ सिंपल वेब पोर्टल. सो आप 2 मेथड से ये एक्सेस कर सकते हैं. एक अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल कंप्यूटर, एंड सेकेंड मेथड इज आप इजीली गूगल पे एलकॉम के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं. ओके, यू कैन एक्सेस इट.
सो या सिक्योरिटी की जब बात की तो आपको 2-factor authentication मिलता है. Okay, once you purchase this AWS facility, क्या होता है, आपको एक मेल रिसीव होता है. Okay, वहाँ मेल पे आपको will have the email ID जो कि आप पासवर्ड एंड सिक्योर पिन आप इजीली ओपन करके मेल अपना पासवर्ड जो आप रख सकते हैं, सिक्योर पिन भी आप चेंज कर सकते हैं. सो इट इज एनक्रिप्टेड, सो डेटा जो स्टोरेज रहता है इट इज एनक्रिप्टेड, इट इज सेफ. ओके, एनक्रिप्टेड रिमोट एक्सेस भी होगा. ये ऐसा नहीं होगा कि इट विल गेट लीक जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल, इट विल नॉट लीक. ओके, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट विल बी सेफ. ओके, तो अगर ज्यादा यूजर्स हैं तो आपने वो सेपरेट प्राइवेट बैकअप फोल्डर्स भी रख सकते हैं इफ दे डोंट वांट टू शेयर विद एवरीवन. सो आपका 2-factor ऑथेंटिकेशन जो कि पिन होगा और दूसरा आपका पासवर्ड होगा. सो दिस इज हाउ इट इज. सो सिक्योरिटी हो, डेटा स्टोरेज हो, रिमोट एक्सेस हो, यूजर वाइज इंफॉर्मेशन हो, इट विल गिव यू द कंप्लीट सिक्योरिटी. ओके, so here we have it, TallyPrime powered by AWS plans. So these are the options available. Presently हमारे पास pack होगा, okay, wherein 3 months का होगा, 6 months का होगा and 12 months. Okay, and we also have 24 pack, presently नहीं, but 12-hour pack we have. Okay, so यहाँ पे आके आपको available packs with usage option. Okay, so एक user है, okay, that is 12-hour pack. So इसका VM configuration you can see. Okay, so that means single user को चाहिए. So this is how it is. And vCPU. Okay, so CPU, this configuration आपको information दी गई है. Okay, so RAM store, root volume, etc. Backup related कितना store कर सकते हैं आप. Okay, and usage hour per day. It will be 12-hour pack since so morning 9 से लेके शाम के 9 o'clock तक ये work करेगा. Okay, so this is 12-hour pack. This is how it will work, and it will work only for 26 days. Okay, so that means Sunday पे ये work नहीं करेगा. Okay, so excluding Sundays it will work 26 days. So आपको user wise होगा, आपको single user चाहिए, आपको 2 users को चाहिए, 4 users, 8 users, 12 users, 16 users. This is how it is. Okay, आप user wise आपको जो convenient होगा, you can take it and easily work on it. Okay, so next thing आपको मैं practically एक demo देती हूँ कि this will actually. Okay, so ये है Elcom website, so ssp.elcom.digital. Okay, so आपको mail आएगा wherein you will receive your email and a password or pin. As per your convenience, you can set it, and then you can log in it. Okay, so you can see here आपको यहाँ पे you will get logout option, your computer. Okay, and secure pin, अगर आपको pin change करना है तो easily you can do it. One second, sorry to interrupt. Somebody's mic is on. There's some disturbance happening. Can you please turn off your mic? Is it at your end, ma'am? No, ma'am. Actually, house construction is going on, might be. Okay, this is at your end, is it? Sorry. Is this noise at your end or still you can hear it? No, not now. Perfect, not now, ma'am. Yes, you can start now. No. Yes. So you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर tally.net account details चाहिए, आपको users include करना है तो ये option पे जा सकते हैं. अगर आपको secure change करना है pin, you can go and do it. And then actions. Okay, आप यहाँ पे you have to go open virtual computer. You can click on it.
So जब आप first time login कर रहे हो, it will take 5 minutes like that. But अगर आप you are using it continuously, then आपको time नहीं लगेगा. It will quickly start. Yes, so this is how it will work. आपका license जो है आप easily यहाँ पे भी activate कर सकते हो. Okay, you can easily go and activate and continue recording your entries. Okay, जो आपका Tally का license होगा, आपको just enter. Me, their host, Syed Nuru Sabah, CA Manish Bhanjali, Bharat Faisal, Jiten Jito Ule, Kenisha Jain, one anyway. Excuse me, somebody. Hello, Gerard sir, can you please mute everyone? I'll just activate it. Yes, I have muted. Shazam ma'am, please unmute yourself. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, thank you. So आपका जो लाइसेंस होगा टैली का वही यूज करके आप इजीली you can use it for AWS as well. Okay. Now moving on to how this works. Okay, same जैसे आपका TallyPrime होगा वैसे ही आपका AWS. Okay, it will work. Okay, अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी हो या वाउचर्स रिकॉर्ड करने हो, everything you can do it very easily. Okay, so example, you can go to create. Okay, and you can create your ledgers. Hello. All right, so it will work same as you do it in your Tally. Okay, कोई changes नहीं है. So आप company create कर सकते हो, backup ले सकते हो, you can mail, you can export. So all the features you will get. So this is how your AWS will work, and आपको benefit ये है कि आप कहीं पे भी okay, from anywhere. Okay. So you can see I have all these things. So this is how. Okay. So you can see entries, everything.
Okay, so it is very beneficial for people who opt for work from home, or जो partners होते हैं, they are outside business premises, then easily you can go for this AWS plan. Okay, so 12-hour packs will be there, which will work for 26 days. Okay. Next thing, so next topic जो हम discuss करने वाले हैं, it is related to e-way bill. So I hope you all know that in TallyPrime we have a complete solution. It is connected, complete and compliant. Okay, so complete solution, whether you want to generate just single invoice generate करनी है आपको, या bulk में generate करनी हो, या you want to cancel e-way bill, सब कुछ आप जो work करते हैं, okay, जो जनरली हम पोर्टल में करते हैं ई-वे बिल के, आप TallyPrime में भी कर सकते हो. So we have a complete There's a lot of, excuse me, there's a lot of disturbance. I think two handsets are nearby. So voice is echoing. Kindly look into this. Voice is not clear, madam. Yeah, exactly. I'll rejoin 1 second. Meanwhile, the AWS part is over. You can post your queries in the chat box and they'll be taken up in the end. Now, ma'am will start with e-way bill. If you have any queries on AWS, you can post it in the group, in the chat box. Hello. Sir, give us 2 minutes. Ma'am is rejoining. She's disconnected. Okay, fine. Yeah. मनीष, आवाज नहीं आ रही है किसी की भी. साधना मैम, वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़ा डिस्टर्बेंस था. शी इज रिकनेक्टिंग. 2 minutes. Yeah, thank you. Sorry for the delay. Ma'am is just avoiding that background noise and she'll join back in 2 minutes. Meanwhile, about the AWS is majorly because people were of the view कि हम कभी दुकान पे है, कभी घर पे है, कभी कोई और ऑफिस पे है.
we can't carry our laptops or our systems with us. So is there any way that we can connect to our own data whenever we want? So this is a solution for that. This is just plug and play. अपना जैसे Gmail है या WhatsApp है, जहाँ पे भी लॉग चाहिए वहाँ पे लॉगिन कर दिया एंड यूज करना स्टार्ट कर दिया. ये ऐसे मॉडल में बना है. एंड राइट नाउ इट्स थर्ड पार्टी. सो थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करके किया AWS के साथ. एंड गोइंग फॉरवर्ड ये अगर सक्सेस हुआ तो Tally will take it in house. और बाद में वो 9 to 9 वगैरह वो कुछ कंडीशन रहेगा नहीं. So this is about AWS. Ma'am should join in 1 minute. Thank you for patience and not leaving the meeting. Yeah, sorry. मनीष, Yes, sir. ये AWS का कॉस्ट क्या आता है? इसका costing they have a policy of not discussing costing in the meeting. So post meeting, if you have any queries on this, we'll drop a email ID and phone number, and the PDF will be shared. Done. Okay, Manish. Yeah, thank you. Hello. Yogesh sir, we're sorry for the delay. Give us a couple of more minutes. She's just fixing her background. Okay, fine. Meanwhile, if you have any queries, you can put it across. No, I'm asking is AWS is only meant to view the data, right? Or we can alter also? No, you can as well enter the data. Can make the entries, pass on the Yeah, entries. yeah. You can enter the data. और इसमें और ज़्यादा है, ma'am. Because of constraint of time, she told only a little. जैसे कि आपको एक folder भी मिलेगा, okay? And उसमें आप अगर salesman है आपके, तो उनको कितना limited access देना है? उतना. अगर उनको folder A ही access देना है, तो आप सिर्फ folder A access दे सकते हो आपके limited salesman के लिए. आपका price list है, जो भी है, वो उधर ही save कर सकते हो. So you need not Tally on the system. Sorry. It's as good as operating Tally on the system. Like Perfect. Yes. So what comes when you take AWS is आपको एक नया system मिल रहा है, but that is virtual. Yeah. Elcon is distributor for AWS all over India. So that is why this Tally had to join hands with Elcon. Okay, so we get a system, एक user ID और password मिलेगा. वो जहाँ पे भी आप विमल इंडस्ट्रीज का यूजर आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे, वहां पे सिस्टम ओपन हो जाएगा आपका. You have TallyPrime pre-installed and you have a folder also. उस फोल्डर में आपका प्राइस लिस्ट हो गया या आपका कुछ कैलकुलेशंस है, वर्किंग्स है, जॉब वर्कशीट है, जो भी है आप वहां पे भी सेव कर सकते हो. Excellent. Yeah. And वहां पे अगर आपका कुछ परचेज डॉक्यूमेंट्स है, you can limit the rights to be viewed only by owners. और अगर आपके सेल्स का प्राइस लिस्ट वगैरह है, तो you can give the view access to your salesman as well. तो आपके सेल्समैन अगर अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग सेल्समैन हैं, तो आप उतने फोल्डर्स बना सकते हो. This is very extensive, but because of time constraint, we have just given you a small flavor of it. And if you're more interested, you can anyhow reach us. We'll drop an email ID at the end. Okay, this also has the single user, multi-user kind. I mean, Yes, correct. Single user, multi-user, 9 to 9, 24 hours. बहुत सारे conditions है. So वो पूरा chart आपको share किया जाएगा. जो भी जिसने भी register किया है या join किया है, everyone will get that chart on their email ID. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am is here. Saida ma'am, can you resume? Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. But I'm not able to share the screen, so. Jared sir, please make her the host. Yeah, you are the host now. You can start, ma'am. Thank you. Yeah. Sorry for the inconvenience, everyone. I just share my screen. Okay, I hope screen is visible now. Yes, ma'am. madam. Yes. All right. Thank you. So we were discussing about e-way bill. Okay, so in TallyPrime, we have a complete solution when it comes to e-way bill. So from TallyPrime itself, you can easily generate this. Okay, and to start generating e-way bill from TallyPrime, you have to just take up only 2 steps. Okay, it is very simple. So you have to do that only one time. Okay, so आप एक बार वो set कर देंगे आपके e-way bill portal में, तो आप TallyPrime पे easily generate कर सकते हैं e-way bill. Okay, so these are the 3 requirements. So first requirement, आपको e-way bill portal में register होना होगा. That is, you must be registered. So I hope that आप लोग जहाँ हैं, so almost 80 to 90% customers जो है registered होते हैं.
अगर न्यू कस्टमर है तो फर्स्ट आपको ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर होना है. एंड देन सेकेंड थिंग जो रिक्वायरमेंट होगी, आपको चूज करना है GSP एज टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके. एंड थर्ड थिंग क्या होगा, आपको API यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा. ओके. सो दिस इज हाउ इट विल बी requirement. So आपको how you can easily generate e-way bill. So you have to click on registration process है पहले ये पे. So this is registration process आपको already पता है. So I'll just skip this part and go to the part which we need it. Okay. So आपको username और password required होता है. So how you can get this username and password? So this is the steps. ओके. सो रजिस्ट्रेशन पार्ट हो गया. अभी हम कैसे हाउ वी कैन सेलेक्ट टाली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिस वन एज योर GSP. ओके. सो यहाँ से आपका एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो स्टेप 1 आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा. यू हैव टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड अलोंग विद कैप्चा एंड देन यू कैन क्लिक ऑन लॉगिन. फिर आपको होम बटन पे जाना है. ओके. एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन पार्ट. हियर फॉर GSP आपको सेलेक्ट करना है. Okay. Then you can enter your email ID and mobile number and then you can click on send OTP. Okay. So आपको यहाँ पे OTP और receive होगा to your mobile number और email ID. You can enter the same and then you can click on add or view. Here you have to select GSP as Tally India Private Limited and then यहाँ पे आपको user name आपको ये मिलेगा, default आपको मिलेगा. Okay. But आपको 3 characters enter करना है, like example 1 2 3. Okay, 3 4 5 6, any 3 characters you have to enter it. And जो password की आपकी जो maximum length you can enter up to 15. Okay, you can enter it and then you can enter your password and then you can click on add. Okay, so आपके login credentials create हो चुके. So this is just one time step which you have to do. After that आप TallyPrime से complete solution होगा, आप maintain कर सकते हो. Okay. So you don't have to switch between TallyPrime and this NIC portal जो आपकी e-way bill portal होती है. Because complete solution होगा, आपको voucher recording हो, invoice recording हो. After recording that, directly you can generate e-way bill from TallyPrime. Okay, hassle free होगा. So let us see, यहाँ पे एक video है wherein how simple way you can generate your e-way bill. Okay. So first आपको as usual party name, sales ledger, okay, item details you have to fill. Okay, so as usual you can have to enter. And Tally Smart अगर आपकी goods value more than 50,000 है तो आपको option मिल जाएगा that you have to generate e-way bill and you can fill the details as usual the way you do it in the portal. Okay, so you can enter these details, party details, transportation detail, vehicle number. Okay. अगर अपनी personal vehicle में भी आप transport कर रहे हो goods तो you can enter the same vehicle number here and generate it. Okay, so that's all. आपको यहाँ पे username और password which we got from the portal. Okay, you have to enter that and आप once login करोगे using this username and password up to 6 hours ये active होगा. Okay, and again if you want to generate you have to enter username and password. Okay, so then it will start the process. So within few seconds it will happen. Okay, यहाँ पे time लग रहा है because we have done it at level. So here you can see the notification that e-way bill is generated successfully. So you can go to preview and check. So यहाँ पे आप देख सकते हो 12-digit e-way bill number आपको print मिल जाएगी. So first sheet में tax invoice and in second sheet you will get your e-way bill. Okay. So very simple, right? You don't have to move from Tally to portal, portal to Tally. Okay. So ये information आपको Tally में भी store होती है, even the reporting part as well. Okay. So you can easily take the print and hand over to your, the person who is delivering the goods. तो आपको easily दे सकते हो. That's all. Okay. So this is how simple way होता है करने का. Not only single e-way bill,
आप अगर 4, 5, 6 इनवॉइसेस हैं एंड यू वांट टू जनरेट द ई-वे बिल, डेफिनेटली आप टैली प्राइम से बल्क में भी जनरेट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कैंसिल योर ई-वे बिल. ओके, you can cancel, you can extend, you can fetch. All this is possible from TallyPrime. Okay. Any doubts? Anyone? Okay. You all can drop. At the end, we will discuss the queries. ओके, सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेबिलिटी टू वेरीफाई जीएसटी एंड एचएसएन और सैक कोड. So from TallyPrime itself, आप easily you can verify your GST number whether it is correct, incorrect. आपको Tally notify करेगा. Okay, so same goes with the HSN as well. Okay, so when you're filing your returns, क्या होता है, GST नंबर रॉन्ग होते हैं हमारे या HSN कोड रॉन्ग होता है, राइट, when we are doing the filing of GST R1 और reconciliation कर रहे हैं एंड हमारे फाइलिंग में प्रॉब्लम होती है एंड इट टेक्स टाइम. सो प्रिकॉशंस आर बेटर, राइट. सो TallyPrime में आप इजीली प्रायोरी देख सकते हो कि GST नंबर करेक्ट है, HSN कोड करेक्ट है, तो हम प्रायोर देख लेंगे तो आपको इश्यू नहीं होगी, राइट. सो ये कैपेबिलिटी आपको TallyPrime देता है. एंड लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स. ओके, आप सिंगल पार्टी GSTN भी वेरीफाई कर सकते हो, इट विल डेफिनेटली वैलिडेट. अगर आपको बल्क में करना है तो आप बल्क n नंबर ऑफ GST नंबर्स के लिए भी कर सकते हो. सो लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स. So you can go to your alter option and open any one party ledger or either create it. Okay, so right side pe you can see here you will get the option get GST in or UN info. You have to click on it and then you have to press on yes. So you can see agar aapka GST number correct hai, okay, so Tally will easily give the validation and it will verify. Okay, agar aapka correct hai to you can see as per portal and as per books. Along with this आपको status भी मिलेगा. Okay, whether this company is active और ई-वे बिल भी ब्लॉक होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो ये सिंगल वैलिडेशन था. अभी हम बल्क देखते हैं. ओके, हाउ वी कैन वैलिडेट बल्क GST. सो यू हैव टू गो टू अपडेट पार्टी GST इन गो टू ऑप्शन. ओके, यू कैन क्लिक ऑन ऑल आइटम्स एंड यू कैन हमारे यहाँ पे 8 पार्टीज हैं. So we will validate this at one go. So again, you have to click on GST info. So all GST, you can click on this. Okay, आपको yes देना है यहाँ पे. You have to enter the username and password. Okay, and then it will start validating. So you can see here 6 correct है and you can see here ये red पे है. So we can easily check why this is red. Okay, you can just ये enable it and you can see इनका ई-वे बिल जो है वो ब्लॉक है इसलिए वो रेड पे आया. अगर इनकरेक्ट है तो भी आपको मालूम हो जाएगा, इन्फो नॉट फाउंड मिलेगा या ई-वे GST नंबर इनकरेक्ट है, यू विल गेट टू नो. ओके, अगर GST नंबर भी इनकरेक्ट हो तो आप इजीली यहाँ पे चेक करके वैलिडेट करके यू कैन डू द करेक्शंस. ओके, सो यू विल गेट द स्टेटस. Next thing, okay, so with the simple steps you can also validate your HSN code. Okay, so this is the most needed one, correct. So आप create पे जाके एक item create कर लो. So you can create the item here. Okay, you can enter here, select your unit and then you can enable your GST details. Okay, we have entered HSN and we can validate it. Get HSN info or SAC info. So goods के लिए HSN होता है, SAC का के आपके service related के होता है. So you can enter here username and password. So you can notice one thing here. अगर आप ई-वे बिल पोर्टल पे जाके you are selecting there as Tally India Private Limited as your GSP. Okay, जो आपको API username और password मिलेगा, it is not useful only to generate your e-way bills. Okay, ये आपको even if you want to validate your GST numbers or HSN, okay, it will help you out. Okay, you need it.
सो ये आपका इम्पोर्टेंट नोट है कि आपको जो API यूजर नेम ईवे बिल का होगा वो आपको वैलिडेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है. इफ यू डोंट रजिस्टर देयर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी. ओके, सो दैट इज व्हाई आपको वैलिडेशन चाहिए तो you have to use this. Okay, if you enter this then only it will get validated. You can enter the username and password. Okay, so you can see here अगर आपका जो HSN कोड आपने एंटर किया है वो करेक्ट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेम मिलेगा. Okay, so now let us see how we can validate for multiple stock items. So you have to use go to option and type your GST rate setup. Okay, and then you can click on it, and then you can use your space bar and select the items. So जिसको item को validate करना है आप space bar देके select कर सकते हो, and then you can click on get HSN or SAC info. Okay, and then you can click on yes, and then you can enter your password. ये video है इसलिए आपको again and again you have to enter your username and password, but when you do it in real time ये 6 साल से लिए work करेगा continuously. So you can see here जो भी correct होंगे HSN this one codes products के लिए it will be here. अगर wrong होंगे तो आपको यहाँ पे invalid HSN code करके information मिल जाएगी. And then what you can do, you can correct it. Okay, so easily at one you can do this corrections. Okay, and then when you're filing your GST R1 and doing some reconciliation or anything आपको issues नहीं होंगे. Okay, you can have a validation prior. Okay, so that is your important note. So you must have your API username and password जो आपको ईवे बिल से मिलेगा, even for validating your HSN or GST or SAC. Okay, you need this. And then topic which we are going to discuss is GST reports. So आपके जो 3 GST reports होते हैं. Okay, so GST R1, GSTR 2 and GSTR 3B. So we are going to discuss that. Okay, so first GST R1, of course ये हम फाइल करते हैं GST R1 wherein we show all the outward supplies जो भी जितने भी sales होके रहते हैं we enter it. Okay, so it can be monthly or quarterly. Okay, so as per your preference. So हम ये फाइल करते हैं GST R1. So TallyPrime अगर आपके पास है and you are using it, so it will save your work. TallyPrime will save your work. So how it will save? You can easily view the GST R1 report in TallyPrime. Okay, अगर आपके कुछ errors हैं, okay, mistakes हैं, like आपको you will get to know. Okay, if you just go to the report, you will get to know incomplete or mismatch in information. Okay, so easily you will get to know अगर GST number wrong है या हमने rate कुछ rate में mistake किया हुआ है, any mistake आप easily deduct कर सकते हो and you can correct it. And third step आप क्या कर सकते हो, आप easily you can get the export. Okay, you can easily export it to JSON format and then आपको JSON file मिल जाएगी. As we all know GST portal accept करता है JSON format, correct? So we can directly upload that JSON format. Okay, GST portal में update कर सकते हैं and quickly your GST R1 will be updated and आप just file कर सकते हो and it will reduce your manual work as well, correct? It will save your time, it will save the manpower, etc. Okay, so easily you can do it. So आपको क्या करना है, you can just go to GST R1 report, you can use your go to option. Okay, type GST R1 there, फिर आपको यहाँ पे GST R1 report मिलेगी. You can change the period as per your convenience, आप period change कर सकते हो. Okay, alt F2 देके change कर लो and then अगर कुछ corrections हैं, okay, uncertain transactions correction needed करके यहाँ पे आपको separate bucket दिया जाएगा. So wherein you can go and correct it. GST number wrong हो सकता है, tax calculation कुछ mismatch है आपको पता होगा. And before submitting your JSON format, okay, file जो भी होती है आपको make sure करना है कि कोई कुछ भी mismatch में ना हो. Okay, you can do it and get your JSON file. Export पे click कर दिया, आपका export हो जाएगा and you will get the JSON format. Okay, and then what you can do, easily upload in your GST portal and super quick आप अपना GST return file कर सकते हो, GST R1. Okay, so this is your GST R1 report.
you will get in your tally, and you can see here यहाँ पे uncertain transaction में here it is showing as 1. That means एक entry में कुछ mistake है. You will click on that entry and you will find out क्या mistake है. You will correct it and then you can easily submit it. Okay, so this is related to your GST R1. Yeah, so before filing you have to ensure that कुछ भी incomplete या mismatch ना हो. Okay, that button. Okay, and then GST R1 आपको export करना है JSON format में. So you will get 3 formats export करने के टाइम पे. आपको JSON मिलेगा, Excel मिलेगा और CSV format. Okay, so CSV format अगर कुछ आप offline template use कर रहे हो तो you have to take it in the CSV format. फिर आप offline template में डाल सकते हो. If you want to do some correction you can do it, and then that is also fine. But अगर आप directly JSON file पे upload करोगे, that is also easy. Okay, so आपको options मिलेंगे यहाँ पे export करने के लिए. And then moving on to your GSTR2. So as we all know, GSTR2 हम file नहीं करते हैं. Okay, auto populate होता है. जैसे कि आप you all file GSTR1, तो क्या होता है, जो भी हमारे buyers होते हैं, okay, buyers of the product, उनके पोर्टल में GSTR2A में अपडेट हो जाएगा. करेक्ट. सो हम जस्ट रिकंसिलेशन करते हैं. ओके, सो वी विल मैच आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोर्टल में उतना ही रिफ्लेक्ट हुआ या एडिशनल वी विल चेक. ओके, सो वी विल जस्ट डू द रिकंसिलेशन पार्ट. सो टैली प्राइम से आप इजीली रिकंसिलेशन कर सकते हो. ओके, so this is how you can do. You can go to your GSTR2 report. Okay, and then you can load the file. आपको क्या करना है, मतलब you have to log into a GST portal. वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है JSON फाइल जो होती है पोर्टल में, आपको इजीली मिल जाएगी. You can download that and you can import in your tally. Okay, जैसे ही आप import कर लेते हो tally में, यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्लू में होगा वो आपके पोर्टल के एंट्रीज होंगे. ओके, एंड जो भी ब्लैक में होगा दैट विल बी योर बुक्स एंट्री जो आप टैली में एंटर किए होते हैं. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ओके, हाउ वी कैन डू रिकंसिलेशन. सो यहाँ पे वीडियो है, आई विल जस्ट प्ले दिस वीडियो फॉर यू. ओके, आपको गो टू ऑप्शन में जाना है एंड यू कैन ओपन GSTR2 रिपोर्ट. यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है. सो आई जस्ट वांट इट फॉर जुलाई मंथ. आई विल सेलेक्ट जुलाई मंथ हियर. Okay, and then you can see here, okay, we have here all our B2B, and then you have to click on import. Okay, so कहाँ से आप import करोगे, आप tally your portal GST portal में आप जो फाइल JSON फॉर्मेट की जो फाइल होती है GSTR2 की, वो आपको डाउनलोड करना है. फिर वही सेम फाइल आपको टैली में इंपोर्ट करना है. Okay, so you'll click on the import, load JSON file. Okay, and then यहाँ पे आप select कर सकते हो जहाँ आपने फाइल अपनी सेव की हो. Okay, any drive whichever you have selected or saved, you can just go ahead. So total number of invoices 17 है. So we are going to do the reconciliation. So you can see here जो भी blue में है, it is as per the portal. Okay, this is as per the portal. So you can see only minor differences here. Okay, and then this is as per book, which is there in the black. Okay, so then ये difference आपको find करना होता है. Why we are getting the difference? So you can see थोड़ा minor difference है. So type of mismatches, partial mismatch हो सकते हैं. Okay, पैसे difference हो सकता है. Available in portal but not in books. Okay, this can also happen. So you can include those entries. Okay, so here you can see available in portal but not in books. So what will happen is like जब आपका GST portal से आप JSON file download किए होते हैं, so that might be updated in your portal, but हमने books में record नहीं किया होगा. Maybe we might have missed out. So आप वो include कर सकते हो TallyPrime में. And then last option जो है available in books but not in portal. हमने books में record किया हुआ है, but आपके GST portal में जो है ना reflect नहीं हुआ है GST2A में. That also we can cross check and inform the buyer, seller. Okay, आप seller को inform कर सकते हो कि it is not updated, because ये required है because आपको input claim करना है. Correct, you have to claim your inputs. So these are the mismatch,
and then you can press enter and correct those things. Okay, so you can see Delhi, you can see here we have the entry. Okay, amount you can see here, but फिर भी ये reflect नहीं हुआ है because tax paid यहाँ पे आपको 163 दिखा रहा है and we have a difference of 0.5. So we have the difference here. So that correction we have to do. So it is available in book as well as in portal, but थोड़े minor changes की वजह से it has not reconciled. So easily you can open it, open करके आपको corrections करना है. Okay, you can just check the GST number also. If it is incorrect, तभी भी आपको नहीं होगा. Okay, now you can see it is reconciled. Okay, and here we have a next case here. Okay, you can see same date पे we have here 2 invoices जो कि place of supply Maharashtra है. Okay, you'll press enter here and you can see taxable amount different है, integrated tax amount different है. So because of that difference reconcile नहीं हुआ है. Okay, so you can physically check this क्यों reconcile नहीं हुआ है. Okay, not entire thing you have to check physically. Tally will do it. अगर आपको जो mismatch मिलता है you can check that and correct it. Okay, आपको क्या करना है, you can check it physically and correct those errors. Okay, and you can also check with your supplier, that is seller के पास आप check कर सकते हो. Okay, if they have updated wrongly आप उनको notify कर सकते हो. Okay, so for a detailed video tally solutions okay, YouTube में आपको available है दोनों languages, English as well as Hindi. Okay, you can watch that for a detailed one. Okay, next thing GSTR 3B. Okay, so GSTR 3B हम file करते हैं. It is a monthly return. Okay, so from TallyPrime itself आप JSON file में export करके you can file your GSTR 3B. Okay, you can view अगर कुछ corrections हो required हो तो you will be getting to know, right? So अगर आप report में देखेंगे तो mismatch और incomplete करके information होगी, you can correct it and then easily आप JSON file में or you can submit and export and then you can easily file. Okay, so that's all. So GSTR 3B, so आपके जो तीनों returns हैं आप easily export करके file कर सकते हैं. Okay, it will save your time. You can try. Okay, and always remember जब भी आप कर रहे हो uncertain transactions में zero होना चाहिए. Okay, otherwise wrong हो जाएगा. So you have to make sure these buckets are zero. So ये आपका GSTR 3B है, you can see it is 0. So आपको क्या करना है, यहाँ पे export option होगा. You have to click on that export and just click on send. आपको JSON format file मिल जाएगी. Okay, you can cross check as well. So last topic जो हम discuss करने वाले हैं, it is related to banking. Okay, so banking में we will discuss 2 things. One is how we can set the check range. Okay, so checkbook number जो होती है ना, अगर हमारी book 1 से लेके we have around 50 checks, so 1 to 50 easily आप starting number और end number डाल सकते हैं. Okay, जब भी आप payment कर रहे हो Tally will take it automatically, check numbers automatic आपके enter होते जाएंगे. So that we will discuss and then we will discuss reconciliation also, auto bank reconciliation. Okay, so before that जो different banking transactions होते क्या हैं. Okay, we have different banking transactions here. You can see ATM, card, check, okay, ECS, e-fund transfer. अगर आप NEFT, RTGS, IMPS, transfer कर रहे हैं online. In that case, you can opt for e-fund transfer. जब भी आप payment कर रहे हो ना, when you're doing the payment, आपको transaction type it will ask. Okay, so you can easily select it. अगर कुछ और है तो you can go for others. Okay, this is how you will get banking transaction types. Okay, now we will see bank reconciliation using TallyPrime. Okay, so this is how you will do it. First, आप जब when you're creating the ledger HDFC, आपको F12 पे जाके auto bank reconciliation enable करना है, and then you can easily go to your bank reconciliation report and import the file. Okay, to understand this better, I'll just explain you through video. Okay, so आपको यहाँ पे banking option होगा, you have to click on that. Okay, here bank reconciliation.
Okay, select your bank जिसका आप reconciliation करना चाहते हो. Here you can see आपको 2 methods मिलेंगे reconciliation करने के लिए. One is manual, second one is auto. Okay, manual reconciliation में क्या होता है? यहाँ पे आपको entries नजर आ रही हैं. You will enter the dates on your own. That is manual reconciliation. Auto bank reconciliation क्या होता है? आप क्या कर सकते हो? आपकी बैंक ऑनलाइन है. You have a online. Okay, you do the online transaction. एंड वहां पे से इजीली आप एक्सेल फॉर्मेट, ओके, एक्सेल फाइल, CSV फॉर्मेट, जो भी आपकी कन्वीनियंस होगा, बेटर गो फॉर एक्सेल. ओके, आपका जो स्टेटमेंट होगा ना, बैंक स्टेटमेंट, वहां पे जाके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. करेक्ट, वी ऑल डू दैट. इफ नॉट, हम बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टू गेट द एक्सेल फॉर्मेट. ओके, आपको वो लेना है. ओके, अगर आपकी नेट बैंकिंग है, अवेलेबल है, तो आपको अभी भी कन्वीनियंट हो जाएगा. वहां से आपको डाउनलोड करना है. फिर आपको क्या करना है, टैली में आपको इंपोर्ट करना है. ओके, यू हैव टू जस्ट इंपोर्ट दैट फाइल और आपका बैंक रिकंसिलिएशन विल बी डन. ओके, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. अगर कुछ चेंजेस हैं, मिसमैच है, तो वी विल गेट टू नो दैट एंड ओनली दोस थिंग्स हम उस पे करेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट कंटिन्यू प्लेइंग दिस. सो वी हैव टू इंपोर्ट द स्टेटमेंट. यू कैन क्लिक ऑन इट. सो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है. Here you will have it. Just press enter. Okay. If you have stored somewhere else, definitely you can select that folder. And you can see CSV, delimited or Excel format hoga. You can just select as supported and press enter. Okay, it's getting imported. Okay, you can see here 14 transaction. So 7 reconcile ho chuke hain, and for few you can see dates nahi enter hue. So we have a difference here. Amount not reflected in company books. Okay, so these are the transactions. So easily हम इस entries का mapping कर सकते हैं. So ये होता क्या है, कैसे आपको कब मिसमैच मिलेगा? जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर और रेफरेंस नंबर और चेक नंबर, ये इंपॉर्टेंट होता है. सो टैली कैसे ट्रैक करता है आपको? ये आपको बेस्ड ऑन ये इंस्ट्रूमेंट नंबर ही ट्रैक करता है. सो दिस इंस्ट्रूमेंट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो आपने टैली में एंटर किया है और बैंक में जो होगा, सो इज मैचिंग, रिकंसिलिएशन आप वेरी क्विकली कर सकते हो. ओके, so you can see here bank instrument date and bank dates. Okay, so जो match नहीं कर रहे हैं, आप easily map कर सकते हो by clicking on reconcile unlinked. So if you select this reconcile unlinked option, okay, so that is what called as, can click on it. So जो भी similar entries हैं, वो amount के आपको यहाँ पे नजर आएंगे. You will be able to see it. Okay, you can press enter and it will be reconciled. Okay, sometimes what will happen is, अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया सिमिलर अमाउंट के या वाउचर नंबर, अपने इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं एंटर किया है, तो मैपिंग हो जाएगी. एंड दिस इज नॉट जस्ट डन बाय वन. अगर आपको सारी एक साथ मैपिंग करनी है, बल्क मैपिंग करनी है, तो आप जा सकते हो. ओके, यू कैन गो टू द रिकंसाइल ऑल अनलिंक्ड. ओके, इफ यू क्लिक ऑन दैट, आपके जो भी एंट्रीज हैं सब मैप होना स्टार्ट हो जाएंगी. Okay, it got reconciled. Okay, जो भी आपको skip करना है, you can skip it by pressing Alt B. Okay, अगर आपको new invoice insert करनी हो, यहाँ यहीं से, that is possible by going to create voucher. Why this is needed? Sometimes what will happen, आपके बैंक अकाउंट में reflect होगा, but हमने books of accounts में नहीं रखा है. So those kind of vouchers, what we will do, we will include it, right? So we have to create record in our books of accounts. So आप easily create option पे जाके you can click on the create, आपको easily create कर सकते हो. Okay, so very simple. जो भी हो गया आपका, it is very quick, accurate मिलेगा, stress free होगा. जो भी additional entries हैं वो आप delete कर सकते हैं if not required. Already reconcile हो चुके हैं those amounts. And still if it is not matching, if you don't, few entries जो आपको delete करनी है वो भी कर सकते हो आप, delete unlinked.
So that's all. आपका reconcile हो जाएगा. अगर आपको include reconcile transaction भी देखना है तो basis of value on your right side option होगा. You have to just enable it and you will get it. Okay, जो भी reconcile हो. So this is how easily आप bank reconciliation complete कर सकते हो. Okay. मैंने भी ये try किया है. I have tried it practically. So it will definitely work. Okay. So आप easily reconcile कर सकते हो. And especially accountants जो होते हैं, you know, it will not be hectic for them as well as for CAs and auditors. Okay. Okay. If you have any doubts, you can ask. And one more thing I just wanted to show you, वो check range का. Okay. So example. So you can enter all the account number, IFSC code, you can select your bank, etc. Okay. And here you can set the check range. Okay. So example, आपकी check book का no starting number ये है, इतने checks हैं आपके पास, and then ending check number भी डाल सकते हैं. You have to enter it. You can see. So 100 checks, 50 checks, 20 checks. जो भी first number और second number, जो भी range होगा आपका, you have to enter it. And you can also give the name here. If in case आपके जो भी 100 checks हैं, all are done, okay, पूरे utilize कर लिए, तो आप next checkbook का जो number होगा यहाँ पे enter कर सकते हो. Okay, you can continue here and save it. And then what you can do, you can go to your vouchers and you can click on your payments, enter it. Okay. You can see here, automatic आपको आ जाएगा check number. If you don't want it or if you want some changes, ये checkbook 1 नहीं है, if it is 2, you can change it. Okay. Otherwise, automatic work करेगा, it will keep on coming. अगर आपको नहीं चाहिए, तो you can select your not applicable. Okay, that's all. So this is how easily आपको capture होगा check range. Okay, so अगर आपको कुछ doubts हैं, you are free to ask. Okay. Okay, please repeat for multiple ledgers GST info. Okay, so ये आपको validation का बोल रहे हैं ना आप? Okay. Okay. So अगर multiple GST validate करना हो आपको, so here you have to type it as update party GST. Okay. You can select all items. Okay. And then you can see here, आपको right side में यहाँ पे option मिलेगा, get GST or UIN info. You have to click on that. All GST, enter yes. Okay, so you can enter your username and password, which you will get from e-waybill portal. Okay, API username and password. So you can see 6 are correct, but एक incorrect है. You know, it is showing in red. So we can press enter and check why it is in red.
You can see e-way bill जो block है, it is blocked. उनका e-way bill, so it will show as blocked. अगर वो company close हो चुकी है and it is not active as per GST, तो आपको यहाँ पे inactive दिखेगा. Still it is active, so active. अगर वो returns file नहीं किए हैं तो it will be blocked. We can easily identify here. Okay. अगर जो भी है, okay, as per books or as per portal, it has to match. Okay. Then only that is correct. Whatever GST number we have entered. कभी कभार क्या होता है, especially auditors or CAs, जब भी हम bill enter कर रहे हो, और accountants also. Okay. जब हम ledger create कर रहे होते हैं, in bill books sometimes there will be mistakes in GST numbers. Correct. So easily वो आप identify कर सकते हो, and you can call them and collect the right GST numbers, or if not, you can check here. Okay. Next, how to import? Sir, Manish sir, import. Yeah, this was covered, ma'am. This was covered. You played an audio video. Okay. All right. Questions on security part. Okay. So Bharat sir, आपको क्या doubt है इसमें security part? I think it's an AWS, right? हाँ. मैं जानना चाहता था टैली जो हैक होते हैं तो टैली कितना सिक्योर्ड है कि आई हैव अ वर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट ईयर तो मेरा टैली हैक हो गया था और दे वर आस्किंग मी बिटकॉइंस Okay. so luckily I had a backup in my pen drive so I was saved तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं how we can manage the things? Yeah, sure sir. Thank you for this question. So first thing, ये जो AWS है ना, it is very secure. ये virtual होता है, okay? Nothing physical, it is virtual. आपको देखो, आपका क्या होता है? Usually हम username और password ही provide करते हैं, but इसके साथ आपको secure pin भी मिलेगा. It is two-factor authenticated, okay? So आपका वो hack नहीं कर सकते. Okay, you can easily. It is safe and secure. जो भी आपका data भी होगा, it is completely safe because we have linked with the trusted brand AWS. Okay. So we can trust AWS. Okay, ma'am. Thank you. अगर आपको issues हो तो आप in between आप secure pin जो है password जो है change कर सकते हैं. ठीक है madam. Okay. Yeah. Madam, I would like to continue on Bharat Bhai's question. अगर ये hack भी हो जाता है, तो is the data saved in your system wherein it can be retrieved? Yes sir. जो भी आप entries करते हो, okay, virtually जो आप entries करते हो, so same entries will be also saved in your TallyPrime. जो आपका normal TallyPrime होता है, and वहाँ पे आपका data store होता है. Okay, it is both virtual as well as आपके system में भी. नहीं आपके डेटा बैंक में सेव्ड रहता है वेरी मतलब अगर ऐसे कुछ हो जाता है अगर ऐसे इवेंचुअली समथिंग लाइक दिस हैपेंस इज इट पॉसिबल टू रिट्रीव डू यू हैव अ डेटा बैंक आपको बेटर सेफ्टी पर्पस के लिए आपको बैकअप लेना होगा यू कैन कीप योर बैकअप जस्ट द वे नॉर्मल TallyPrime में हम क्या करते हैं वी ऑलवेज टेक बैकअप्स राइट इन अ मंथ और 2 months आप वैसे बैकअप ले सकते हो एंड यू कैन स्टोर इन योर हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स आल्सो थैंक यू Thank you. I would like to add something. Wimmer Industries, I am not sure about your name. Sir, what you can do is there are small add-ons for auto backup, yeah, backup at some other drive. You can go for that. 500,000 में आपको मिल जाएगा. But what happens with this is you have a double backup of Tally at every time. अगर एक वाला बैकअप आपका कुछ हो भी गया तो 1 दिन 2 दिन पुराना बैकअप आपको मिल जाएगा. Thank you. Yeah. And one more option you can get is अगर आपके users ज़्यादा हैं तो आप Tally Server 9 भी ले सकते हो वहाँ पे आपको ऑटो बैकअप होता रहेगा डेटा Tally Server 9 okay next can you please tell once again the BRS so bank reconciliation so yeah okay so I'll just tell about this BRS as well 1 second sorry
Yeah. So first thing क्या करना होगा, the complete thing I'll tell you in the steps. Okay, you can listen to it very carefully. So आपको first ledger create करना होगा. I mean already होगा because here it is existing company. आपको वो ledger पे जाना होगा. You have to go to the alter option. You can open that ledger and you can press F12. Okay, वहाँ पे आपको option होगा auto bank reconciliation. You can enable that option. Okay, once you enable that, आपको यहाँ पे effective date पूछा जाएगा and you can enter it, and then rest everything will be safe. Okay, you can save it, and then what you can do is you can go to the banking option. Okay, yeah, you can go to the banking option, bank reconciliation option. Okay, you can open the bank, this one. Okay, jitni bhi banks ho aapki, you can do the reconciliation. So if you want to do it manually, you can do it, but for quick way, you can easily import it. Okay, what you can do, मैंने भी ये try किया हुआ है and it will definitely work. Okay, what you have to do is आपका जो net banking होता है, okay, definitely if you have the net banking, it will be very easy. Okay, you have to just go to your net banking, वहां से आपको statement download Excel format में you can download it from the days or months जितना भी आपको चाहिए, and you can import it here. Okay, and you can easily import here. Okay, so bank statement जहां भी आपने store किया हुआ है, you can select that file path. It is supported, you have to select. Okay, whichever format it is, CSV or Excel, you can just select supported. Okay, for a better understanding, and then you can open it, import it. Okay, so you can see 14 entries में 7 reconcile हो चुके हैं and 7 में कुछ issues हैं. Why this issues comes, क्यों mismatch आता है, अगर हमने हमारे accounts में record नहीं किया हुआ है, so that is one issue. Okay, अगर हमने record नहीं किया हुआ है, it is there in our bank, that time you will get the mismatch. और bank ने कुछ mistake किया हुआ है, that time you will get the mismatch. And one more reason would be आपने instrument number में इनकरेक्ट किया हुआ है, तब आपको मिसमैच मिलेगा. अगर आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं एंटर किया हुआ है, ओके, देन डेफिनेटली आप मैपिंग करके रिकंसिलिएशन कर सकते हो. दैट इज इजी. बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज व्हेनेवर यू रिकॉर्ड योर एंट्रीज, तब आप रेफरेंस नंबर जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा, बेटर एंटर इट. ओके, लाइक हियर आई विल जस्ट शो यू व्हेन यू जस्ट सेलेक्ट इट हियर. ओके, here. Okay, so यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर, इट कैन बी चेक नंबर, योर इट कैन बी योर रेफरेंस नंबर, इट कैन बी आरटीजीएस, जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा. ओके, सो आपको यहाँ पे वो एंटर करना होगा. बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल ट्रैक. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने इजिली किया हुआ है तो रिकंसिलिएशन यू कैन डू इट वेरी क्विकली. ओके, so here this is how it is. जो भी mismatch होगा, जो you can click on your right side. Okay, mapping करना होगा आपको, you can click on reconcile unlinked. Okay, and then अगर जो भी entries similar amount के होंगे, like example here we have 50 rupees, okay, or 500 rupees, जो भी entry होगी, अगर match amount match कर रहा है and instrument number आपने enter नहीं किया हुआ है, you can see in company's books of account 3 entries को हमने instrument number नहीं दवाया हुआ है. Okay, so in that case what you can do, you can just select here unlinked, and then here जो भी similar amount के entries होंगे, that will be visible here. You can just press enter और reconcile हो जाएगा. It will move up. Okay, so same way अगर आपको bulk में mapping करनी हो तो you can click on reconcile all unlinked. Okay, right side पे आपको option मिलेगा and then you can select it and just press enter, reconcile हो जाएगा. अगर वो amount की entries नहीं है, if it is not available, फिर आपको यहाँ पे ऐसे option. That's all. This is how easily you can do the mapping and reconciliation. And for better understanding, आपको there is a video also, you can go and check. Detail में आपको मिलेगा. This cost it have
that is Elcom. Okay, so R1 partners, you can check with sir. Okay, for the cost you can check with the sir. Okay, because it will be user wise. आपके single user हो या 4 users हो. Okay, you can check the cost with sir. Sir, costing के लिए we have dropped the number. It's a policy that we don't share costing in the meeting, so we can you can reach out to us. Okay, so outstanding. Which outstanding is it? Bills receivable. No, he has explained. I mean, she has explained the issue down below. Okay. Others, please unmute. Please mute yourselves. Madam, in outstanding old bill number, same bill number, current. Okay, so if I'm not wrong, previous year में जो आपने bill number use किया हुआ है, and it is same in the current year, and it is merging. So this is what you're trying to tell. Bharti ma'am, you can unmute yourself. Okay, so this is what you're telling. So for this, we have a very simple option. Okay. So what you can do, you can go to your alter or create. Okay. So here we have an option for altering your voucher type. आपको यहाँ पे voucher type पे जाना है, and here you can select your sales invoice. Okay. And here you have the option use advanced configuration. Enable this. Okay. So of course, whether it is GST portal or Tally, it hates duplication, right? It will merge and problem will be there. So in this case, you can set your unique invoice numbers for every year. Okay. So here you can do. So example, here I'll give numerical part 3. Okay. Pre-fill with zeros. Yes. Okay. So here you can go and here you can set 1 for 1st April. So here you can give the prefix details as per your convenience. Here I'll give BE/. Okay. And then here you can set this 21 to 22. You can enter your financial year. So जैसा भी आपको unique invoice number चाहिए, you can set it. Okay. 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 So what will happen? जब भी आप new financial year move कर रहे हो, unique one. Okay. And you can see here, अभी ये है, अगर आप date change करते हो, example, it is for 1st May 2022. हेलो मैडम, सुनाई Next दे रहा है financial year. आपको? So there is मैडम no सुन रहे हैं confusion आप? in your invoices. नहीं मैडम, मैडम आप सुन रहे हैं मेरे बात? Yes, ma'am. Yes. Hello. मैडम मैं सेल्स हाँ, के नहीं बोलिए बोल मैम. रही हूँ, मैं परचेज का बोल रही हूँ मैडम. हेलो. Purchase का. हाँ, परचेज का बोल रही हूँ. हाँ, अगर मेरे सप्लायर से लास्ट ईयर सेम नंबर भेजे रहेंगे, उसका पेमेंट कर दिए रहेंगे, फिर अभी नया सेम नंबर आए तो वो लास्ट ईयर का बिल और ये ईयर का बिल मर्ज हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है मैम. So in that हाँ. case आप उनको एक बार बोल सकते हो, because if it is वो उनको उनका हिसाब से ही बनाएंगे ना वो. हाँ बनाएंगे मैम, डेफिनेटली. कोई ऑप्शन नहीं है क्या? स्टार्टिंग मेरा बहुत सारा सप्लायर से यही होता है कि लास्ट ईयर का मतलब 2 साल का पुराना रहे तो भी वो करंट ईयर में जाके मर्ज होता है बिल. वो आउटस्टैंडिंग में तो
यही बताता है, अगर पेमेंट भी नहीं हुआ रहता दोनों बिल का टोटल बताता रहता है, तो नया बिल का नीचे आना चाहिए ना मुझे। तो आउटस्टैंडिंग जब भी देखती हूँ मैं, पुराना बिल भी नया बिल भी ऊपर ही आ जाता है। मैडम मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ यस गया? मैम, जो भी यस मैम, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल होते हैं, हाँ, अगर जो वो आपके नया बिल के प्रीवियस ईयर ऊपर आ में जाता है। जो नंबर होता हाँ 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 हाँ, वही होता है ना आपका इशू। हाँ, वही है अब मैडम। एग्जाम्पल यहाँ मैंने एंटर किया हुआ, हाँ, यू हैव एंटर्ड हियर 001, करेक्ट। हाँ फिर यहाँ पे आप पार्टी नेम सेलेक्ट करते हो, ओके। हाँ ये न्यू रेफ में रिकॉर्ड करते हो, राइट मैम? हाँ मैडम, ये आप जो स्क्रीन बोल रहे हैं ना, वो स्क्रीन नहीं आएगा, मुझे नहीं आ रहा है ना ये स्क्रीन न्यू रिकॉर्ड की, वो कुछ ये भी नहीं आ रहा है। ये हाँ, स्क्रीन नहीं आती आपको? ओके, सो आप क्या कर सकते हो, F12 पे जाके आप, ओके, यू कैन एनेबल योर, ओके। सो यहाँ पे आपको यूज F12 में, हाँ आपको वो विजिबल होगा डिफॉल्ट। और आपको जब आप लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं, ओके, व्हेन यू क्रिएटिंग अ लेजर आल्सो, यहाँ पे आपको मेंटेन बिल बाय बिल, ओके, यहाँ पे आपको ये enable करना है, ये भी करना है। ओके। नहीं, उधर क्या बोले आप, कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोले मैडम? कॉन्फ़िगरेशन में F12 में F12 न्यू रेफरेंस का, हाँ यहाँ पे है ना, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल लोकेशन, हाँ, नो है, डिसेबल नो होना है। चाहिए आपका। हाँ, बिल वाइज डिटेल पर बिल एलोकेशन नो है, यस करना है क्या? नहीं मैम, आपको फिर आना चाहिए वो, नो प्रॉब्लम। आप वी कैन कनेक्ट एंड टेक योर एनी डेस्क इन चेक, इज इट ओके मैम? हाँ ठीक है। ओके, दैट विल बी बेटर। नो सर, मल्टीपल जीएसटी इन सिंगल टैली नहीं, आपको एक जीएसटी नंबर ही मिलेगा, एक जीएसटी नंबर पे आप कर सकते हो, एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके और एक जीएसटी नंबर है तो यू हैव टू क्रिएट वन मोर कंपनी। ओके, अगर आपको डाउट्स है तो यू कैन अनम्यूट, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। Ma'am, somebody has sent me a doubt on WhatsApp. ओके, He's telling कि अगर कोई कस्टमर का पहले वो अनरजिस्टर्ड थे, ओके, और बाद में रजिस्टर हो गए इन द ईयर, तो उसके लिए दूसरा लेजर बनाना पड़ता है कि सेम लेजर में कंटिन्यू कर सकते हैं, इज आस्किंग। ओके, या आप क्या कर सकते हो, व्हेन ही बिकम्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इन F11 फीचर्स, जब आप यहाँ पे जीएसटी सेट कर रहे हो, यहाँ पे आपको डेट होगा जीएसटी नहीं, ये वाला एप्लीकेबल। नहीं, ये वाला नहीं, वो पर्सन तो रजिस्टर्ड है, उसका कस्टमर, ओके, कस्टमर अप्रैल टू जून अनरजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड में बिलिंग हो गया, अभी जुलाई 1 से वो रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए सेपरेट लेजर बनाना है कि उसमें ही क्रिएट करना है? नहीं, सेपरेट कर लोगे तो बेटर होगा, सेपरेट बिकॉज ही यहाँ करना पे है। आपको जब आप, हाँ बिकॉज आप यहाँ पे जब सेट कर रहे हो, ओके, वी विल नॉट गेट द ऑप्शन फॉर डेट हियर। या करेक्ट, तो इस दिन से है करके वी कांट डू, सो ही हैज टू डू इट सेपरेटली, राइट? या सेपरेटली वी हैव टू क्रिएट, बिकॉज आपको यहाँ पे डेट नहीं मिलेगा। ओके, डन। एंड वन मोर क्वेरी व्हाट आई रिसीव्ड इज, अभी जेसन फाइल जो आपने अपलोड करने का दिखाया फॉर GSTR2 reconciliation, so will it anyhow affect your the client's data in Tally? No, it will not affect.
it will not affect. And will it be saved? As in, अगर मेरे को कल वापस next month आके देखना है कि last time कौन सा हुआ था, कौन सा नहीं हुआ, तो will it be saved that view, or he has to do it, redo it? What he can do, he can go to TallyPrime and वहाँ पे आपको basis of value करके option होगा on your right side. वहाँ पे आपको include all reconciled entries करके option होगा. If you enable that option, जो भी reconciliation होगा, you can check it. Reconcile. Okay. Can you just show it, ma'am? I guess. Actually, I don't have the data. I have to import and show Okay. it. No. Okay. No problem. Basis of value, and then he has to save it. Is it? Yeah, on your right side, like the way we have in the video also. 1 second. Yeah. Include reconcile transaction. Yes. Okay. If it does this, everything will be saved. Yeah, you can view that. Okay. Done, ma'am. Thank you. That's all. Okay. Anybody else has got any queries? You can post it here, or you can unmute and you can talk. Bharti ma'am, you can drop a mail to us, or you can call us on that number, and we'll find a solution for you as soon as possible. Is it all? Okay, then, ma'am, I think that's all. We are done with the queries, and we'll keep the session on for a minute or two. We need suggestions and feedback of what other sessions do you want from us. So we will keep on having monthly sessions. और किस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, you can just drop it here, and we'll try and arrange those sessions as soon as possible for all of you all. Yes, definitely, and we are also coming up with edit log option. Okay, so I hope आपको पता है कि जब from next financial, that is coming financial year, 1st April 2022, जो भी companies purview of MC के अंदर आते हैं, they have to use the edit log option, that is audit trail. Audit trail, right? Yeah. Yes, audit trail. Yes. Soon it will be coming. Yeah. Once it is launched, we will have a session on that as well, ma'am. Okay. Right now, I guess that's all. So if we receive any queries on our email ID, we'll connect them to you, and you can take it forward. Yeah, sure. Okay. Yes, ma'am. Thank you, everyone, for patiently listening to everything that ma'am said. And of course, Tally is the software that you can use. And जितना software smart रहेगा, उतना आपका business smart होगा. And with this, I end the session. And thank you, one and all, once again, for being a patient audience to the session. Thank you. Thank you, ma'am. Devendra ji, next time we will definitely have a session on payroll for proprietor. और ऐसे और भी कुछ आपके suggestions हो तो you can drop a mail to us. You are anyways connected to us. You can drop a mail to us, or on our phone number you can drop a message. We will try to arrange a session on that. Yes, then. Thank you, Gerard sir, for being a part, and also Chairman Prakash ji and Secretary Bharat bhai, also the zone convener Manish Jain. Thank you for being a part, and we'll definitely have more and more sessions like this for empowering our members. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, Chairman. Thank you, sir. Thank you, everyone.